हमारा जो कंसर्न है, we need to cover NCERT 1, that is especially +1 and +2. पहले लोग ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ते थे, 6th 7th 8th 9th, लेकिन वो सब नहीं चाहिए. Those things we will be covering through our notes. Okay, so those of you who entered a little late in the session, आपके लिए जो ज्योग्राफी है वो यहाँ से रिकॉर्डिंग जो है इसकी अवेलेबल हो जाएगी, so don't worry too much. Okay, so एनसीईआरटी +1 और +2 के अंदर करना क्या है एग्जैक्टली, हमारे यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है वो एक तो हमने वर्कआउट करना, और एक जो नोट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करूंगा, एक ये हमने पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर. एवरी सेक्शन दैट वी विल बी कवरिंग, इट विल टेक अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज 1 month, बिकॉज 12 months है हमारे पास. तो हमने इस तरह से तैयारी करनी है कि धीरे धीरे 1 by 1 वी कवर ऑल द सेक्शंस इन अ थॉरो मैनर. ओके, so first those components will be covered which are going to be there in prelims. In priority we'll cover those sections, okay, along with those sections which are then going to be there in mains. तो ज्योग्राफी से एक बार शुरुआत करेंगे. अब एनसीईआरटी की जो है +1 की, इसमें आप सबके पास होगी या नहीं होगी, आई विल शेयर इट विद यू इन अ डिजिटल फॉर्मेट, देन इफ यू नीड यू कैन बाय इट. ओके, अदरवाइज आपको जो यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ लोगे वो अपने आप में सफिशिएंट है. लेट मी शो यू द एनसीईआरटी. हियर इट इज विजिबल. आर्यन, इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके, सो एनसीईआरटी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये तो कुछ खास हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि क्या क्या डिविजन्स हैं ज्योग्राफी की and so on and so forth. That's not required for us. We just need to understand one thing, that geography is the study of Earth. Okay. Now, as far as the UPSC specific topic is concerned, so the origin and evolution of Earth, that is something that we deal with. So as far as the origin of Earth is concerned, various theories have been created. You know, कुछ theories लोगों ने तब दी जब उनके पास ज्यादा scientific instruments नहीं थे और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डेटा या कंप्यूटिंग लॉजिक्स नहीं अवेलेबल हुआ करते थे. तो उन्होंने अपने हिसाब से सोच के इमेजिनेशन के बेसिस पे थ्योरीज दी. जैसे आइंस्टीन के टाइम पे भी थ्योरीज जो थी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होती थी, है ना. तो बाद में जाके उनको प्रूव किया गया. या तो फिलोसोफर्स होते थे और वो बैठ के अपना कुछ ना कुछ इमेजिनेशन से कुछ थ्योरी देने की कोशिश करते थे. तो हमारे भी जैसे जो हिंदू धर्म ग्रंथ है ना, उनमें इस तरह से लिखा है कि पहले कुछ नहीं था, इट वाज शिवा. शिवा, दैट व्हिच इज नॉट, the meaning of Shiva, and he was lying peacefully throughout the universe, and one fine day Shakti appeared, and as Shakti appeared, both Shiva and Shakti combinedly started spewing the universe out of the mouth. Okay, so ये हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा है. वो हमारे लोगों की हाइपोथेसिस थी. उसी तरह से अर्ली थ्योरीज ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पे भी. तो कैसी है देखिए. So large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the Earth. One of the earlier and popular arguments was by German philosopher Immanuel Kant. Immanuel Kant के बारे में आप जब ethics पढ़ोगे ना तब भी आएगा. ठीक है, इन्होंने क्या कहा? Then mathematician Laplace revised it in 1796, and this is known as the Nebular Hypothesis. Prelims के अंदर they will ask you Nebular Hypothesis. ठीक है, और इसको हम इमैनुअल कैंट से शुरू जरूर होता है, लेकिन एक्चुअल में लैप्लेस के साथ ज्यादा कनेक्ट करता है. क्या बोलता है? So it considered that the planets were formed out of a cloud of a material associated with the youthful sun. इसको बोलते हैं Oort cloud, WORT. It's like a hot gas cloud. Okay? उसमें से as it is planet का origin होता है. वैशाली, your mic is on. Please turn it off. Okay. Now thereafter, what happened? Later in 1900, Chamberlain and Moulton, ये दो बंदे और आए, they considered that wandering star approached the sun. As a result, a cigar-shaped extension was made. तो जितना भी material था, वो as it is फैल गया. ठीक है. So this separated from the solar surface. As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun, and it slowly condensed into planet. Imagination है ना कि कोई स्टार उसमें से ऐसे स्ट्राइक करके क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो बंदे को सिर्फ सोलर सरफेस या सोलर प्लैनेट्स या हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पता है.
There is a sun and 9 planets, and that's all. Right? Then what happened thereafter? So Sir James Jean and later Sir Harold Jeffrey supported this theory. बहुत सारे लोग इसके बारे में ठीक भी मान रहे. Then at a later date, the arguments considered of a companion to the sun to have been coexisting, and these arguments are called binary theories. एक सन होगा और एक और वैसे ही कुछ होगा, आपस में टकरा गए होंगे, फिर कुछ सोलर सिस्टम निकला होगा. 1950, there was Otto Schmidt in Russia and Karl Richter in Germany. So somewhat revised the nebular hypothesis, though differing in detail. They considered that the sun was surrounded by a solar nebula containing mostly hydrogen and helium, along with what may be termed as dust. The friction and collision of the particles led to the formation of disc-shaped cloud, and the planets were formed through the process of accretion, मतलब coming together. तो ये जो सारी theories है ना, nebular hypothesis एक core theory रही इनके अंदर. अब नेबुलर हाइपोथेसिस आज तक कुछ लोग उसमें बिलीव करते हैं, कुछ उसको डिसबिलीव करते हैं. आप देखिए 1950 तक भी इसके बारे में बात हो रही है. इट इज वन ऑफ द थ्योरीज, या बट द वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी. सो नॉट द सीरीज बिग बैंग थ्योरी, बट द थ्योरी बिग बैंग थ्योरी. व्हाट डज दिस से? सो it is also called the expanding universe theory and was given by Edwin Hubble in 1920. इसके मुताबिक क्या है कि शुरुआती दौर में यूनिवर्स कुछ नहीं है, एक स्मॉल एटम जैसा छोटा सा है. The entire material is condensed into one small atom and then it explodes. As it explodes, entire universe is being spewed out of that explosion only. Okay? So let's see. As the time passes, galaxies move further and further apart. आज भी ऐसा हो रहा है. Universe continuously expand कर रहा है. So that is a supporting aspect of this Big Bang theory. You can experiment and find what does expanding universe means. Take a balloon and mark some points on it to represent the galaxies. So outer surface में points mark कर दीजिए. जैसे जैसे उसमें हवा भरते जाएंगे तो balloon expansion के साथ साथ galaxies दूर होते जाएंगे. ये पर्टिकुलर चीज आज हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, इसलिए बिग बैंग थ्योरी हम ज्यादा बिलीव कर रहे हैं. 1920 में तो ऐसा कुछ नहीं था, बट नाउ वी नो. Okay. However, you will find that besides the increase in distances between the points on the balloon, the points themselves are expanding. So not just the distance between them, but the galaxies themselves will be expanding. So this is not in accordance with the fact. Scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansions of galaxies. So balloon example is only partially correct. तो हमारी गैलेक्सी जैसे है मिल्की वे, तो खुद में कुछ एक्सपेंशन नहीं हो रहा है. अब बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है? देयर आर सर्टेन स्टेजेस इट सेज. सो इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल, जिसको हमारी माइथोलॉजी में शिवा बोलते हैं. ठीक है, सिंगुलर एटम. ओके, विद एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी. Okay, so like a tiny ball. In fact, it's called Sthul, Sukshma, Shunya, and Shiva. ये चार stages हैं. Sthul or Sthula is something that you can see around you. It is something physical. It is tangible. You can touch it. You can feel it. That is Sthula. Sukshma means microscopic. That is the second level of existence within our mythology. So that you can observe under a microscopic lens, bacteria or something like that. Okay. Then there is Shunya, that is zero, a nullity. Now this is not visible to the eye. Okay. Then there is Shiva, that is beyond nullity. That is how we go about deciding these things. जिसको हम tiny ball या कुछ भी बोलते हैं. For us that means Sukshma. Okay. Now at the Big Bang, the tiny ball exploded violently. This led to huge expansion. Why it exploded, nobody knows. उन्होंने कुछ कहा भी नहीं. उन्होंने कहा बस ये explode हो गया. Then it is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. The expansion continues even to the present day. As it grew, some energy was converted into matter. E is equal to mc square, Einstein's energy mass equation.
There was particularly rapid expansion within fraction of seconds after the bang. Thereafter, it slowed down. जैसे आप कोई भी दिवाली पे पटाखा चलाते हो ना, तो एक बार टक करके चलता है, फिर उसकी जो साउंड वेव्स हैं धीरे धीरे फैलती चली जाती है। उसी तरह से ये भी धीरे धीरे जैसे दूर जाएगा एक्सप्लोजन स्लो डाउन हो जाएगा। Within the first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. So energy to mass conversion. Within 3 lakh years from the Big Bang, the temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter. क्योंकि इसके beyond atomic matter will start perishing. जैसे जैसे बनता जाएगा साथ ही साथ perish भी होता जाएगा, burn out होता जाएगा। जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर देखते हैं ना कि जो एटॉमिक न्यूक्लियर है इट ब्रेक्स डाउन एंड स्प्लिट्स इनटू इट बेसिक सब एटॉमिक पार्ट्स, तो वो प्रोपोजन की फिजिबिलिटी रहती है। एंड द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड? द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। तो धीरे धीरे गैलेक्सीज का स्पेस बढ़ रहा है। एंड ऑल्टरनेटिव टू दिस वाज द होयल्स कॉन्सेप्ट of steady state. That means it is not expanding. अब जहां पे पहुंचना था पहुंच गया. It is a steady universe. Okay? So it's considered the universe to be roughly the same at any point of time. However, the greater evidence becoming available about the expanding universe, and now we are more and more accepting the fact कि हाँ वाकई में जो universe है वो expand कर रहा है. Okay? That is how it is going on. Now star formation. The distribution of matter and energy was not even in the early universe. कैसे भी इधर उधर बिखर रहा था, क्योंकि जब एक्सप्लोजन होता है तो कुछ एक सिमेट्रिकल लेवल पे तो एक्सप्लोजन होगा नहीं। These initial density differences gave rise to differences in gravitational forces, and it caused the matter to get drawn together. मतलब पहले जब एक्सप्लोजन हुआ तो कहीं पे भी एटम्स बन रहे हैं। अब जैसे जैसे कोई एक एटम दूसरे के पास में है तो एक दूसरे की तरफ ग्रेविटी फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अट्रैक्ट होगा। So these formed the basis of the development of the galaxies. Now, a galaxy contains a large number of stars. They are spread over vast distances, measured in thousands of light year. UPSC में ना एक ये भी क्वेश्चन आया, light year is a distance of which of the following? PCS पंजाब जैसे पेपर्स में भी पूछ लेते हैं। So it is a distance, not time. The diameter of the individual galaxies range from 80,000 to 150,000 light years. The galaxy starts to form accumulation of hydrogen gases in the form of very large cloud called nebula. तो galaxy कैसे बनेगा? धीरे धीरे large hydrogen gas के even superheated hydrogen gas के clouds जो है वो इकट्ठे होने शुरू होंगे, तो nebula is the first stage. Eventually, growing nebula develops localized clumps of gas. These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies, giving rise to formation of a star. The formation of star is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ago. तो सबसे पहले stars बनते हैं, हाइड्रोजन की गैस इकट्ठी हुई, वो हाइड्रोजन गैस जैसे जैसे इकट्ठा होगा, you heard about something called fusion. The two atomic hydrogen combine to giving a helium atom and some lot of energy. So this is the fusion reaction, जिसको हम थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार आज हमारे जो सन के अंदर भी यही सब चल रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, टू हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजिंग टुगेदर टू क्रिएट हीलियम प्लस लॉट ऑफ एनर्जी। दिस स्टार्ट, दिस इज द बेसिक। लाइट ईयर की मेजरमेंट क्या है? तो लाइक आई सेड, दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स। So it is the distance traveled by the light. Ultimately, light travels at a speed of 3 lakh kilometers per second. Considering this distance, the light will travel in 1 year is taken to be 1 light year. तो लाइट आप यहाँ से थ्रो कर दीजिए या किसी भी स्टार से, तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? That is called light year. And this distance is how much? This is 9.46 into 10 raised to power 12 kilometers. So that's quite a unimaginable distance for people living on Earth, है ना? क्योंकि हमारे तो अर्थ का डायमीटर इतना नहीं है। The mean distance between the sun and the earth is 149,598,000 kilometers. In terms of light year, it is only 8.311 minute of a year. तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है? तो एक लाइट ईयर भी कंप्लीट नहीं हो रहा। So this is the situation. Now,
फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. अब स्टार हमारे पास बन गया. सबसे पहले there is a hot gas formation, nebula clouds, yeah, coming to star, and now from star you need to go to planets. So following are considered to be the stages in the development of planets. The stars are localized lumps of a gas within a nebula. The gravitational force within the lumps leads to the formation of core to the gas cloud. A huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core. तो जहां पे एक स्टार है उसका एक कोर गैस क्लाउड होगा जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है और उसके साथ साथ एक रोटेटिंग डिस्क बन जाएगी. Then in the next stage, the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develops into small round objects. So this is basically now coming out to be planet material. So these small rounded objects, by the process of cohesion, that means coming together into what is called as planetesimals. So small planet looking like bodies. Larger bodies start forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together. Planetesimals are a large number of smaller bodies. So they are looking like our moon. छोटे छोटे bodies इधर उधर create होने शुरू हो जाएंगे. In the final stage, these large number of small planetesimals accrete to form a few large bodies in the form of planet. तो जो rotating disk है उसके आसपास gravity के तहत ये सारी bodies इकट्ठी होती जाएंगी और एक round shape बना लेंगी. That becomes the planet. तो ओवरऑल हमारे भी जो एक स्टार है सन उसके आसपास इस तरह से प्लैनेट बन गया. अभी इन प्लैनेट्स में से फिर धीरे धीरे गैसियस एक्सप्लोरेशन चलनी शुरू हो जाएगी. अलग अलग गैसेस से सेक्रीट करेंगे जैसे जैसे इनकी कूलिंग डाउन होगा और उस कूलिंग डाउन के बेसिस पे फिर अर्थ जैसे प्लैनेट बनेंगे. क्या? तो व्हाट अबाउट आवर सोलर सिस्टम? So our solar system consists of right now 8 planets or 9 planets. Do we consider Jupiter as a planet? Yes. Do we consider Pluto as a planet? No, No, sir. sir. There are So right now we are considering Pluto not as a planet. It's a planetoid kind of a thing, but it's not a complete planet. Okay. Because उसने जो आसपास का एरिया वो क्लियर नहीं किया, तो इसलिए हमारा अभी 9 प्लैनेट की बजाय अभी 8 प्लैनेट है. ठीक है. एनसीईआरटी जब लास्ट रिवाइज हुई थी तो उस टाइम पे ये अभी करंट अफेयर में था तो ये नहीं आया एड ऑन. तो know this that there are 8 planets. Pluto is not considered as a full planet now. The 10th planet, 2003 UB313, has also been recently cited, but they are not particularly in the definition of planet. So don't worry. The nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation some 5.56 billion years ago. So essentially, हमारी जो history of planet है, तो last era, first era हम use करते हैं, वो 5 billion years ago से शुरू करते हैं. ठीक है. Our solar system consists of the sun, 8 planets, 63 moons, millions of smaller bodies like asteroids, comets, and huge amounts of dust grains and gases and so many other things. Okay, so what all is there? इसके अंदर, out of the again 8 planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, these are called inner planets. तो ये आज भी वैसे ही है, despite 8 या 9 का difference जो आया. Now they lie between the sun and the belt of asteroids. And the other 5 planets, these are called the outer planets. So they are the, what all? Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. तो इनको बोलते हैं outer planet. ठीक है. तो यूपीएससी में इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आया, which of the following are inner and outer planets, और जो एस्ट्रॉइड्स की लोकेशन है वो कहाँ पे, उसके बेसिस पे. ठीक है. तो डिवीजन भी एस्ट्रॉइड्स की लोकेशन के बेसिस पे ही की गई है. Right? Okay. Now, alternatively, the first 4 are called terrestrial, meaning Earth-like planets. They are made of rock and metal and have relatively higher densities. The rest 5 are called Jovian or gas giants. So Jovian means Jupiter-like, and they are mostly gaseous. They are not having proper surface underneath them. Okay. Then, आप सोच के देखिए वैसे भी, अगर कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है, एक्सप्लोजन के टाइम पे जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, सॉलिड्स, वो पास में ही रह जाएंगे.
जो गैसियस एलिमेंट्स हैं वो दूर तक बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे प्लैनेट्स अल्टीमेटली एक राउंड ऑफ डिस्क शेप से ही निकल के बाहर आए। तो जो हेवियर एलिमेंट्स थे वो पहले पहले रह गए, तो इनमें से ये 4 इनर प्लैनेट्स बन गए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। एंड देन इसके बाद जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, वो सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के दूसरी तरफ गैसियस प्लैनेट्स हैं, उनके अंदर प्रॉपर टेरेस्ट्रियल एस्पेक्ट नहीं है अपना। The difference between terrestrial and Jovian planets can be attributed to the following conditions. So, the terrestrial planets were formed in the close vicinity of the parent star, where it was too warm for the gases to condense to solid particles. Jovian planets were formed at a quite distant location. दूर जाके बने. The solar wind was more intense near the sun, so it blew off a lot of gas and dust from the terrestrial planet. These solar winds were not all that intense to cause similar removal of gases from the Jovian planets. तो हमारे ही प्लैनेट से जो गैसेस रिमूव हुई वो जाके जोवियन प्लैनेट बन गई। दूसरा स्टैंड ये भी है। The terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases. तो ये 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स के बेसिस पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का क्रिएशन की बात की जाती है। प्रीलिम्स में इसके ऊपर जब क्वेश्चन बनेगा तो वो ऐसी स्टेटमेंट देके आपको पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ इनर एंड आउटर प्लैनेट्स और द डिफरेंसेस बिटवीन द इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। तो वहां पे ये 3 रीजंस इस तरह से स्पेसिफाई किए जा सकते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में इनको इसी तरह से पूछा भी जा सकता है, आउटलाइन द रीजंस और डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियल प्लैनेट्स। तो 150 वर्ड और 250 वर्ड्स दो तरह से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे आपको ये 150 वर्ड का क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। ठीक है, ओके। एंड सिमिलरली 250 वर्ड्स में आपको ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स या बिग बैंग थ्योरी, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने आप में 250 वर्ड का एक्सरसाइज रहेगा। ठीक है, देन कम्स द मून। सो एज फार एज डिस्टेंस, डेंसिटी एक्सेट्रा इज कंसर्न, तो डिस्टेंस तो जैसे जैसे सन से बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे यहाँ पे मार्किंग है, नो बिग डील। डेंसिटी के तौर पे आप देखेंगे तो विच प्लैनेट इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी? अर्थ, है ना। और अर्थ का अगर डेंसिटी के हिसाब से ट्विन देखें तो मरकरी और वीनस, इन दोनों की डेंसिटी भी ठीक ठाक है। ओके, रेडियस के तौर पे हम अर्थ का 1 के फॉर्म में रेडियस लेते हैं, दैट इज बेसिकली द इक्वेटोरियल डिस्टेंस। So 6378.137 kilometers. So that is taken as 1. Now rest of them are in comparison with the Earth. तो हमारे अर्थ का डायमीटर कितना है इक्वेटर का, तो उसके बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, तो बाकी के प्लैनेट हमसे कितने बड़े या छोटे हैं ये उसके कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो इसमें भी देखिए वीनस जो है वो बिल्कुल अर्थ जितना ही है साइज में ऑलमोस्ट, बाकी प्लैनेट उससे बड़े हैं या उससे छोटे हैं। सैटेलाइट्स के तौर पे देखें तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसके पास हैं, जुपिटर या सैटर्न? तो प्रेजेंटली वी आर सेइंग सैटर्न के पास है सर। सैटर्न के पास है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास उन्हीं के पास सैटेलाइट्स आज भी। नाउ कमिंग टू आवर सैटेलाइट, दैट इज द मून। सो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पहले मून मिशंस चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। नाउ वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज Chandrayaan 3 that will be launched for a next moon mission of India. We are still trying to explore many things on moon, especially the rare elements like titanium or magnesium, which are available there in an abundant resource, but वहां से mining करके अर्थ में लाएं कैसे, ये थोड़ा सा इशू रहता है। Okay, so like the origin of Earth, there have been attempts to explain how the moons formed. So in 1838, George Darwin suggested that initially the Earth and the Moon formed of a single rapidly rotating body. The whole mass became a dumbbell-shaped body and eventually it broke. Now, it was also suggested that the material forming the Moon was separated from what we have at the present, the depression that occupies the Pacific Ocean. So, डंबल टूटने के बाद जो बच गया हमारे पास एक डिप्रेशन रह गया, दैट इज द पैसिफिक ओशन का डिप्रेशन। ठीक है, so however the present scientists do not accept either of this explanation. It is now generally believed that the formation of moon as a satellite is an outcome of the giant impact, or what is described as the big splat. So a body
of the size of 1 to 3 times that of Mars collided into the Earth sometime shortly after the Earth was formed. Okay? It blasted a large part of the Earth into the space, and this portion of the blasted material then continued to orbit the Earth and eventually formed into the present Moon some 4.4 billion years ago. So something like took away a part of the Earth only, and that is rotating the Earth even today. So that's the Moon. Accepted theory आज यही है. Now evolution of Earth. So the planet Earth initially was a barren, rocky, hot object. आप ये समझिए कि जैसे वॉल्केनो के आसपास का सिनेरियो होता है ना, लावा स्प्यूट कर रहा है हर तरफ और इट्स लाइक कभी कभी वो फ्रोज हो जाएगा तो वो बैरन है बट अल्टीमेटली रॉकी सरफेस है या हॉट स्प्यूइंग गैसेस हैं. बस ऐसा अर्थ था सारे का सारा. ठीक है. एक नेशनल ज्योग्राफिक की बड़ी अच्छी वीडियो है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के ऊपर. आई विल सेंड यू द लिंक टू दैट वीडियो, टू वॉच इट इन योर फ्री टाइम. ओके. तो उसमें पूरा है कि अर्थ कैसे एवोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद स्पीशीज कैसे आते हैं, फिर ह्यूमंस कैसे आते हैं. तो डू वॉच इट. ओके. तो ये सारी चीजें याद रखनी थोड़ी आसान रहेगी और थोड़ा इंटरेस्ट भी बनना शुरू होगा ज्योग्राफी के अंदर. Now, this is far from the present day picture of the Earth. Hence, there must have been some events, processes which may have caused this change from rocky, barren, hot Earth to a beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life. So, इस तरह से Earth origin करता है. So, let's see one by one come to this part. Development of lithosphere. Lithosphere means the outermost layer. Lith का मतलब होता है solid surface. Okay, या soil या rock. तो इसकी कैसे formation हुई ऊपर का surface? So Earth was mostly in a volatile state during the primordial stage. That means formation से पहले ये volatile सी stage में था, gaseous सी state में था. Due to gradual increase in the density, the temperature inside increased, and as a result, the material inside the Earth started getting separated depending upon their density. तो आप सोचिए कुछ एक मैं हॉट गैसेस का या हॉट लिक्विड का एक मास लेता हूँ. अब उस हॉट लिक्विड मास में क्या होगा कि समथिंग विच इज लाइटर विल कम टू द सरफेस, समथिंग विच इज हेवियर विल गो एंड सेटल डाउन. थिंक ऑफ यू मेकिंग आलू मटर और समथिंग लाइक दैट इन अ कढ़ाई. तो उसकी ग्रेवी ऊपर रहेगी और बाकी का जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे सेटल्ड रहना कोशिश करेगा. उसी तरह से अर्थ है. So when it is hot lava, so the heaviest metals will try to remain at the center and those which are lighter will try to come up at the top. Okay. So this allows the heavier metal like iron to sink towards the center of the earth and the lighter ones to move towards the surface like silicon. So with the passage of time, it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. Over a period of time, condense hota rahega. This later led to the development of the outer surface in the form of a crust. So we got three various aspects in the earth. There is crust, there is mantle, and there is core. Crust is at the outer part, mantle is in between, middle part, and core is the inner part. Okay. Now, during the formation of Moon, due to the giant impact, the earth was further heated up. It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layers. Obviously, जैसे जैसे cooling हो रहा है तो अलग अलग layers में cooling हो रहा है. Now, starting from the surface to the central part, we have layers like crust, mantle, outer and inner core. From the crust to the core, the density of the material increases. Obviously, हमने ये बात कही कि जितने heavier metals होंगे या heavier material होगा वो नीचे core की तरफ जाएगा और जो लाइटर होगा वो क्रस्ट की तरफ रहेगा. तो इसकी अगर मैं डिवीजन आपको बताऊं जो कि आगे जाके आप नोट्स में भी पढ़ोगे तो वो किस तरह से, लेट मी जस्ट शोकेस दैट टू यू. व्हाइट बोर्ड विजिबल? Yes, sir. So think of this as a piece of the earth, not the pizza. Okay. So the outermost part, then the mantle, then this is the, let's say, the core. Okay. So the crust part is there. This is the outermost part. Then there is the mantle, very simply, and then there is the outer core and then the inner core. Okay. इस तरह से
अर्थ की जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कूलिंग हो रही है। आउटर मोस्ट पार्ट में जो ज्यादातर हमारे पास एलिमेंट्स हैं दे आर सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। देन मैंटल के अंदर हमारे पास सिलिकॉन प्लस मैंगनीज, ये है Mg मैग्नीशियम बोलते हैं, और Mn मैंगनीज बोलते हैं, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम है। इनर कोर और आउटर कोर टोटल जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास निकल और आयरन, ये दो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं। इस तरह से इनकी डिवीजन है। इनको याद रखने का तरीका सियाल, सीमा एंड निफ, इस तरह से हम याद। इनको जो बाउंड्रीज हैं सेपरेटिंग, उनके बारे में भी आगे जाके नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतनी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो आउटर कोर है दिस इज लिक्विड and the inner core is solid. This is also solid. This is also solid. In between the upper solid layers, there is one semi-plastic layer in between. So that is called as asthenosphere. Okay? तो उसके बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सेमी प्लास्टिक सी लेयर है, ना तो पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड है, somewhere in between that. Okay? So moving on back to the NCERT. Okay. अब ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि अलग अलग लेयर्स में हमारे पास अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई बेस्ड अपॉन देयर डेंसिटी, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब ये ओशंस, वाटर एवरीवेयर, ये सब कैसे बना? सो एटमॉस्फेयर बनने का एक सिंपल सा तरीका है डीगैसिंग। जब चीजें ठंडी होंगी अर्थ के सरफेस के अंदर, तो जो गैसेस हैं वो बाहर को एस्केप करेंगे, और उन गैसेस के एस्केप को फिर भी हमारी ग्रेविटी होल्ड करके रखेगी अर्थ के पास पास, ठीक है। Now this basically created the atmosphere. They did not go completely out of the gravitational pull, whichever went out, but ultimately whatever was held back near to the Earth's surface, that is called the atmosphere. Okay. So the present composition of the Earth's atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen. Nitrogen हमारे पास करीब करीब 72% है, ऑक्सीजन 21% है, बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है, या छोटी मोटी कोई और गैसेस है, ठीक है। नाउ यू विल बी डीलिंग विद द कॉम्पोजिशन लेटर ऑन कि क्या क्या किसमें है। So there are three stages in the evolution of the present atmosphere. First stage is marked by the loss of the primordial atmosphere. याद कीजिए, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? हॉट गैसेस, हूट क्लाउड, क्या, हाइड्रोजन mainly. In the second stage, the hot interior of the Earth contributed to the evolution of the atmosphere. And finally, the composition of the atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis. तो एक बार जब degassing के बाद जो atmosphere बना, उसके बाद आज तक हम उसमें changes करते आ रहे हैं. For example, oxygen is getting added by the plants, carbon dioxide is getting added by the human civilization. Yeah. The early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of solar winds. तो जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, जिससे आपके जोवियन प्लैनेट्स की क्रिएशन भी हो रही है. This happened not only in case of Earth, but also in all other terrestrial planets because they were close to the sun. So as the solar winds went on, तो ये जो lighter gases थी, hydrogen and helium, they got carried away, which were supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of solar winds. So that is the first stage. Now, during the cooling of the Earth, the gases and water vapor were released from the interior of the solid Earth. वाटर वेपर को लेके हालांकि बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं, जैसे ये भी कहते हैं कि कोई कॉमेट्स जो हैं वो हमारे पास वाटर वेपर लेके आए जैसे जैसे अर्थ को हिट किए, ठीक है. So that's also a theory about it, but anyhow, it is stated that it formed within the Earth's core and then it was released into the atmosphere as it cooled down. Now, this stated the evolution of the present atmosphere. The early atmosphere contained of water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, and very little free oxygen. Oxygen तो बाद में ज्यादा बनना शुरू होगा जब plants बनेंगे. Then, the process through which the gases were outpoured from the interior is called as degassing. Gas बाहर निकलना, ठीक है. Continuous volcanic eruptions contributed to the water vapor, okay,
and the gases. So ये eras हैं जिसके अंदर क्या क्या अर्थ की डेवलपमेंट हुई. So we'll come back to it later, not right now. You can give it a reading after you have watched the video that I'll send you. Okay. So as the earth cooled, the water vapor released started getting condensed. Obviously, the carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in the rainwater, and the temperature further decreased, causing more condensation and more rains. Ultimately, आपको ये तो पता ही है कि पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर लॉस होगा. टेम्परेचर लॉस होने की वजह से it will condense, then the clouds will be formed. After a certain amount of moisture is there, it will start precipitating. जब तक तो वो moisture hold कर सकता है तब तक करेगा. After that, definitely there has to be rain. Yeah, saturation point बोलते हैं इसको. Now the rainwater falling onto the surface got collected in the depression to give rise to the ocean. तो अर्थ के अंदर जितने भी गड्ढे थे क्रस्ट के अंदर वो भर गए पानी से. Over the thousands of years of rainfall happened, which basically led to the oceans that there are today. Now the Earth's oceans were formed within 500 million years from the formation of the Earth. A lot of time. पहले तो पूरा volcanic matter cool down हुआ, degassing हुआ, degassing के बाद moisture condense होके clouds बने, then rain happened, then further degassing happened, more rain happened and continued. Okay, and that the oceans are as old as 4,000 million years ago from this point. Sometime around 3,800 million years ago, life began to evolve. So single-celled or unicellular organism appeared. Yeah. However, around 2,500 to 3,000 million years before the present, the process of photosynthesis, that is taking up of carbon dioxide and sunlight by the plants and giving out oxygen, started. Life was confined to the ocean for a long time. Oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Eventually, oceans were saturated with oxygen, and 2,000 millions ago, the oxygen began to flood the atmosphere. So everywhere there is oxygen now. And with oxygen, you will have the normal life originating the Earth. So this is the last phase in the evolution of the Earth. So it is undoubtedly clear that the initial or even the atmosphere of the Earth was not conducive for the development of life. Modern scientists refer to the origin of life as a chemical reaction, which first generated complex organic molecules like proteins, RNA, DNA, and so on, and assembled them over a period of time. तो अगर आप बेसिकली प्रोटीन को देखोगे तो देयर इज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. ये चार बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके मिलने से बाकी सब हो रहा है. ठीक है. तो वेदर इट इज फैट्स, वेदर इट इज प्रोटीन, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, आपको जो बेसिक से एलिमेंट्स उसमें चाहिए ना, वो यही चाहिए: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. This assemblage was such that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substances. So the record of life that existed on this planet is in different periods is found in the rocks in the form of fossils. तो आज जो हमें डायनासोर या किसी के भी फॉसिल्स मिलते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि कैसे इवॉल्व हुआ. This microscopic structures closely related to the present form of blue algae or blue-green algae have been found in geological formations that are much older than these were some 3,000 million years ago. It can be assumed that life began to evolve sometimes like 3,800 million years ago. The summary of evolution of life from a unicellular bacteria to modern man is given in the geological time scale on page 80. ये जो पीछे के पेज में overall time scale दिया था वो ये है. Okay, so various periods are there: Cenozoic era, etc., etc. They all start from here. The Big Bang happened. There is origin of universe, sun, and this is how it goes on. Okay, so you can just read into it after you watch the video, like I told. Okay, so this is it for the first chapter. अब जैसे मैंने बताया कि इसमें से जो facts आपको उठाए गए हैं, for example, let's practice this. Which of the following figures represents the age of the Earth? हाँ जी, बताइए.
क्या हमारा प्लैनेट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो है, मिलियन ईयर्स अगो है, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो है? कब बना? सर सी। सी, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. लेट्स सी whether it is C or not. अभी आपने ऊपर देखा origin of stars, pre-Cambrian. So this is somewhere the origin of the Earth will happen. 4.6 million years ago. बिलियन में तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना? So everything is in the millions only. Yeah. So अभी अगर मैं इसको लिखता हूँ बिलियन में कन्वर्ट करके, तो this will become 4.6 billion, right? It is 4800 million and it will become 4.6 billion. So therefore the answer is this. उन्होंने बड़े cleverly question पूछा हो. So yes, the answer is C. Now, which one of the following has the longest duration? So eon, period, era और epoch. तो ये भी ऊपर जो टेबल दे रखा है उसी के बेसिस पे है, ठीक है? So there is eon, era, period, epoch. So eon is the largest. उसके अंदर era है, उसके अंदर एक period है, उसके अंदर एक epoch है, ठीक है? So obviously now we have the answer, that is eon. Okay, चलिए आगे देखते हैं. Then which one of the following is not related to the formation or modification of the present atmosphere? So solar wind is related? Yes. Degassing? Yes. Differentiation? Yes. Photosynthesis? इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड नहीं? आंसर हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है. The earlier atmosphere was stripped away by solar winds. ये लिखा हुआ था ना? Hello, hello. So yes, definitely solar winds are there. Degassing की वजह से present atmosphere बना. Differentiation किसको बोलते हैं? That is the layer formation inside the earth, not the atmosphere. Yes or no? Yes, sir. So basically यहाँ पे differentiation connected नहीं. Photosynthesis later on added oxygen to the atmosphere and even today is. So that is why the answer is differentiation. Okay? Then which one of the following represents the inner planets? So planets between the sun and the belt of asteroids. ये तो आपने पढ़ी लिया. इसी तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखे. Then life on the earth appeared around how many years before the present? हाँ जी, ये हमेशा डिस्टर्बिंग रहता है ना. C, yes, sir. C, yes, sir. See, 4.6 billion years ago. Is it Yes, life sir. on the earth? ध्यान से देखो. डी। Unicellular bacteria, 2500 to 3800 million ago. So basically 3.6 billion years ago. वही वाला फॉर्मेट है जो पहले भी आपने पढ़ा, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखिए कौन सा सिलेक्ट किया जाए. 3.8 बिलियन ईयर्स अगो इसको उठा सकते, ठीक है? फाइन. तो आपने सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यूज पे फोकस करना है. डोंट फोकस अपॉन दिस वन. 30 वर्ड क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट नहीं है हमारे पास. हमारे पास 150 वर्ड और 250 वर्ड्स के क्वेश्चंस के फॉर्मेट है. उसमें अब आपने क्वेश्चन आंसर लिखने कौन से हैं इस चैप्टर में से, वो नोट कीजिए. देखो, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? आर यू राइटिंग द क्वेश्चन एवरीबॉडी? पेन एंड पेपर है? Yes, sir. तो लिखिए, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? Discuss the evolution of present day universe. Discuss the evolution of present day universe as per this theory. As per this theory. तो आपको पॉइंट्स वहां से दे रखे, आपको उसी में से इसका आंसर मॉड्यूलेट करना है, ठीक है? That is one. Second question. So, what is atmosphere? Discuss the process of formation of atmosphere of the earth. What is atmosphere? Discuss the process of formation of atmosphere of the earth.
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं और फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। सिंपल एज दैट। सर ये कितने वर्ड्स में लिखने हैं हमें? दोनों के लिए आपके पास 250 वर्ड्स की लिमिट है मैक्सिमम। फिलहाल के लिए आई एम नॉट पुटिंग अ ह्यूज वर्ड लिमिट ऑन यू, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मिनिमम जो वर्ड लिमिट है वो 150 की होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। इस चैप्टर में कोई डाउट्स हैं किसी को तो प्लीज बताइए। एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग? चलिए, अगर लेटर ऑन भी डाउट्स आएंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। मूविंग ऑन। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे हमने बोला था, देयर इज अ क्रस्ट, देयर इज अ मैंटल, देयर इज अ कोर। अब थोड़ा सा उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पर हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता कैसे चलता है? कोई आपने जैसे मूवीज देखी होंगी जिसमें वो माइनिंग करते करते इंटीरियर ऑफ द अर्थ में चलते रहते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ, इस तरह से हॉलीवुड के अंदर मूवीज भी हैं। But anyhow, we are not able to go too much deep into the earth because as you go down, the temperature increases and it becomes volcanic lava, and then it goes on increasing. Everything melts away. So any vehicle that you are thinking of carrying down to the earth's core, it is not going to happen. The deepest point that we have naturally, that is the Mariana Trench, 11.2 kilometers deep. The highest point is the Mount Everest. That's about 8,500 meters. Yeah. So 20 किलोमीटर का हमारे पास इस तरह से करीब करीब जो है वो टॉप एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच में डिफरेंस है। तो मैरियाना ट्रेंच से अगर आप डीप जाना शुरू करेंगे तो शायद आपको नजदीक रास्ता मिल जाए, बट दैट्स दैट। So right now the radius of the earth that we have is 6370 kilometer, and no one can reach the center of the earth and make observation or collect samples there. इस वजह से हमें किसी ना किसी एविडेंस के बेस पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो कुछ तो डायरेक्ट सोर्सेस हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं जिससे अर्थ के इंटीरियर में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो डायरेक्ट सोर्सेस कौन सी हैं? लेट्स सी। द मोस्ट इजीली अवेलेबल solid earth material is the surface rock or the rocks we get from mining areas. Obviously, ultimately everything came from the inside to the outside. Now we know the material started settling in the form of differentiation. जो लाइटर मटेरियल था वो ऊपर की तरफ आया, लेकिन जब वो नीचे से ही ऊपर की तरफ आ रहा है ना कुछ तो नीचे के अवशेष भी साथ में लेके आया। सो गोल्ड माइन्स इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 kilometers. So that's that. इससे डीप हमारे पास गोल्ड माइन्स नहीं है। Going beyond this depth is not possible as it is very hot at this depth and explosions start happening, automatically. Besides mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate the deeper depths to explore these conditions in the crustal portions. Scientists world over are working on 2 major projects such as Deep Ocean Drilling Project and Integrated Ocean Drilling Project. Okay? The deepest drill at Kola in the Arctic Ocean is going on right now, has so far reached the depth of 12 kilometers. तो मैरियाना ट्रेंच से अगर शुरू करेंगे तो मतलब 800 मीटर और नीचे गए, समझ लो। क्योंकि जो मैकेनिकल इक्विपमेंट भी आप लेके जाते हो, आप सोच के देखिए उसके ऊपर पूरे ओशियन का वजन है, तो द अमाउंट ऑफ प्रेशर इट इज अंडर, that is very difficult to survive. And then at that pressure, it has to do the drilling work. That is even more difficult. Now, this and many deep drilling projects have provided large volume of information to the analysis of material collected at different depths. Volcanic eruptions form another source of obtaining direct information. So, जो भी molten material बाहर आएगा, that is magma, thrown off into the surface of the earth, और at the base of the ocean, वो भी अंदर से अर्थ के क्या क्या निकल सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। Okay? So that is also analyzed. However, it is difficult to ascertain the depth source of such magma. कितने डीप से आ रहा है, we don't know. Indirect sources क्या है? तो इनडायरेक्ट सोर्सेस में सबसे बढ़िया सोर्स है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनसे पता चलता है कि हमारे पास अर्थ के अंदर कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ पे लिक्विड है, ये पता लग जाता है। बिकॉज अलग अलग तरह की वेव्स अलग अलग मीडियम के थ्रू ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर indirectly provides the information about the interior. So here
The main part is this one. Yeah. Another source of information are the meteors that at time reach the Earth. ये meteors भी उसी time zone के हैं जिस time पे Earth evolve हुआ था. However, it may be noted that material that becomes available for analysis from meteor is not from the interior of the Earth. The material and the structures observed in the meteors are similar to that of Earth, not the same. They are solid bodies developed out of material same or similar to our planet. Hence, this becomes yet another source of information about the interior of the Earth. तो meteor का material भी हमें कुछ guidance दे सकता है कि हमारा Earth कैसे बना. Okay. Other indirect sources include gravitation, magnetic field, and seismic activity. The gravitational force is not the same at different latitudes on the surface. अगर आप poles के ऊपर जाएंगे तो gravity different है और equator पे gravity different है. So it is greater near the poles and it is less near the equator. उसका कारण है we have certain amount of equatorial bulge and there is a polar flattening. तो ग्रेविटेशन की जो फोर्स है ना वो जैसे जैसे डिस्टेंस दो बॉडीज के बीच में बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वो फोर्स डिक्रीज करती जाती है. इस वजह से पोल्स के अंदर सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस थोड़ा सा कम है. इस वजह से वहां पे ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा है. ठीक है. इक्वेटर में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है इस वजह से वहां पे ग्रेविटी कम है. इट्स लाइक अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसिव बॉडीज लाइक मी एंड माय लैपटॉप. So we will also have a gravitational force between each other. Yeah, as we go away from each other, this force is going to decrease. This is the situation. Okay. इसका formula होता है G is equal to m1 m2 by r square. R is the distance, m1 m2 is the two massive bodies that you are considering here. Okay. Anyhow, so this is because of the distance from the center at the equator being greater than that at the poles. So the gravity values also differ according to the mass of the material. अब ये यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन में कैसे डाला. उन्होंने बोला कि लेट्स से देयर इज अ टनल गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. आई विल जस्ट हेल्प यू इमेजिन थ्रू ड्राइंग इट आल्सो फॉर यू. So UPSC said, so let's say this is the earth and there is this tunnel that you dig from one side to the other side of the earth. Okay? And you drop a ball from this side of the earth into this tunnel. What is going to happen? अब चार सिनेरियो दे दें. A, the ball is going to come out of this side. Okay. B, the ball is not going to go inside, but it is just going to go outside. It will be thrown off. Okay. C, it will oscillate between this and this. एक बार इधर को जाएगा, एक बार इधर को जाएगा, बाहर नहीं आएगा. Oscillate करता रहेगा बीच में. ठीक है. D, it will just go and sit at the center. What do you think is going to happen? Anji? Shruti, what is going to happen? Oscillate. Is it going to oscillate Yes. in between the two? Okay, Yes. fine. Anybody else? Aryan, what is going to happen? Turn on your mic, बताइए. आर्यन का माइक पता नहीं चल रहा है नहीं. वैशाली, what's going to be the case? No idea, sir. No idea. Okay. Don't you think that the ball under the heat at the earth will just perish? Exactly, sir. That's what I thought earlier. but UPSC has not given that scenario. It gave these scenarios. 2011 के आसपास prelims में ऐसा question आया. So it is going to oscillate if the ball survives. So it is going to oscillate between the two. Why? Because the earth is going to have a gravitational pull, no? So because of the gravitational pull, it is going to continuously oscillate. Even at this point, when it is there, it is just going to keep oscillating. Maybe little distance, but it is continuing to oscillate between the two. Okay. So that is the gravitational field. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Coming back to the NCERT again.
Sometimes it puts you in a fix UPSC, so be careful. Anyhow, is the NCERT visible again? Yes, Hello, sir. okay. So the uneven distribution of the mass of the material within the earth influences this value. So gravity भी हर जगह पे same नहीं है, uneven distribution होता है. The reading of gravity at different places is influenced by many other factors, such as a difference is called gravity anomaly. तो हमारे पास एक जगह पे हम expect कर सकते हैं that due to certain mass there will be one kind of gravity, but there is always gravity anomaly because of some kind of disruptions in the mass distribution. Okay, so gravity anomalies give us the information about the distribution of mass of the material in the crust of the earth. तो जिस तरह से हम सोच रहे थे उस तरह से अगर ग्रेविटी वैल्यूज ना आए तो फिर हम मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके ऊपर समझ सकते हैं. Magnetic surveys also provide the information about the distribution of magnetic material in the crustal portion and thus provide the information about distribution of material in this part. Seismic activity is one of the most important sources. So that means the earthquake waves, the shaking of the earth. So regarding the interior of the earth. तो seismic waves में हमारे पास अलग अलग तरह की waves हैं earthquake के अंदर. तो वो कितनी speed से अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं या अर्थ के कौन से पार्ट में से निकल पाती हैं, कौन से में से नहीं निकल पाती, इसके बेसिस पे हम अर्थ का इंटीरियर स्टडी करते हैं. Let's see. The study of seismic wave provides the complete picture of the layered interior. वो जो crust mantle core है ना, उसके बारे में अच्छे से पता लग जाता है. कैसे? So, an earthquake in simple word is the shaking of the earth. And simple, it's a natural event. It is caused due to the release of the energy which generates waves that travel in all directions. होता क्या है, अर्थ के अंदर रॉक क्रस्ट्स हैं अल्टीमेटली, और कहीं ना कहीं पे वो क्रैक हो जाएंगे. क्रैक होने के बाद बहुत देर तक तो वो नहीं मूव करेंगे जब तक उतना एनर्जी नहीं मिल रहा, लेकिन अल्टीमेटली वन विल स्लाइड ओवर द अदर. व्हेन दैट स्लाइडिंग हैपेंस इट विल शेक द अर्थ फ्रॉम द टॉप आल्सो. तो अलग अलग लेयर्स हैं, जब वो टूटेंगी तो फिर उसके बाद पता चलेगा एकदम से एनर्जी रिलीज होगा. So that's what calls the earthquake. अब जहां पे देखिए, as a result the block gets deformed and eventually they slide past one another abruptly. This causes the release of the energy and the energy waves travel in all directions. The point where the energy is released is called the focus of the earthquake. तो जहां पे वो crack appear होके actual में energy release होगा, that's called focus. Also called the hypocenter, and the energy waves traveling in different directions reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called the epicenter. So let's say अर्थ के नीचे कहीं पे भी हाइपोसेंटर या फोकस बनेगा जहां पे एनर्जी एक्चुअल में रिलीज हुई थी, तो उसके एग्जैक्टली ऊपर 90 डिग्री डायरेक्शन में जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द एपिसेंटर. दैट्स वेयर यू विल फील द अर्थक्वेक फर्स्ट. ओके, so it's a point directly above the focus. इतने के ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया. एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, सीधा सीधा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है. ठीक है. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थक्वेक वेव्स. अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने की जरूरत है. ठीक है, तो इसमें फिजिक्स भी आ जाएगी और थोड़ी सी जियोलॉजी भी आ जाएगी. लेट्स सी. सो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मींस द टॉप मोस्ट लेयर. नीचे कुछ नहीं हो रहा है अर्थक्वेक, मैंटल कोर में नथिंग इज गोइंग ऑन, इट्स ऑन द टॉप मोस्ट लेयर. ओके, so it is sufficient to note here that the lithosphere refers to the depth up to 200 kilometers from the surface of the earth. उससे नीचे कोई earthquake नहीं है, कुछ नहीं. ठीक है. An instrument called the seismograph records the waves reaching the surface. So seismograph के अंदर इस तरह से ग्राफ बनता है, तो वो डिटेक्ट करता है कि किस तरह से नीचे अर्थ का शेकिंग हो रहा है. A curve of the earthquake wave recorded on the seismograph is given in figure 3.1. So this is the earthquake waves. तो सबसे पहले कौन सी आई, फिर बाद में, फिर उसके बाद में इस तरह से waves आएंगी. ठीक है. Then note that the curve shows 3 distinct sections, each representing different types of wave pattern.
तो ये जो हमारा ईसीजी लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसमें भी इस तरह का पैटर्न आता है। तो अर्थ के अंदर भी वैसा ही कुछ पैटर्न। आप देखिए, earthquake waves are basically of two types. There are body waves and there are surface waves. Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all direction throughout the body of the earth. तो ये अर्थ के अंदर ही है। एक बॉल इमेजिन कीजिए, उसमें अंदर से कुछ मूवमेंट हुआ तो जो बॉल के अंदर अंदर फील होगा, दैट इज द बॉडी वेव। या hence the name body wave. So they interact with the surface rock and generate the new set of waves called the surface waves. अब body waves की वजह से जो ऊपर फील होगा, that is the surface wave. So these waves move along the surface and the velocity of the wave changes as they travel through the material with different densities. अगर solid material है तो आराम से travel कर सकता है shaking. अगर liquid material है तो travel करना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से differentiation आता है. So denser the material, higher its velocity. Physics lab में कभी आपने वो टोंग ऐसे टेबल पे बजा के देखा? Have you tried that? Class 10th. तो एक पर्टिकुलर सा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये डेंसिटी के हिसाब से, मटेरियल डेंसिटी के हिसाब से इसका साउंड डिफरेंट है. So on your table right now, if there are many things, so pick up your pen and start hitting on the table. This is a different kind of a sound. Pick up a copy and start hitting on the table. That's a different kind of sound. That basically is related to the density of the material. Yeah. So here also that density is starting to change things. So their direction also changes as they reflect or refract when coming across material of different densities. तो जैसे जैसे एक तरफ रॉक है, फिर सॉइल है, फिर वाटर है, फिर माग्मा है, अलग अलग मटेरियल डेंसिटी में जाएगा, तो अलग अलग तरह से उसकी डायरेक्शन या स्पीड जो है वो चेंज करती रहेगी. सो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स दो तरह की हैं. बॉडी वेव्स दो तरह हैं हमारे पास, फर्दर डिवीजन है उनमें. एक है पी वेव्स और एक है एस वेव्स. P waves are also called as primary waves because they are the first ones to arrive, and they are similar to the sound waves. They travel through gaseous, liquid and solid material. तो तीनों तरह के मटेरियल से प्राइमरी वेव्स जो हैं वो पास कर सकते हैं. ये फैक्टर्स इनके प्रीलिम्स में इसी तरह से पूछते हैं. ठीक है. Then S waves arrive at the surface with some lag and they are called as secondary waves. लेकिन secondary waves जो है वो किसके थ्रू पास करते हैं? They pass only through the solid material. They don't pass through liquid. ठीक है. So this is quite characteristic of S wave. And इसी की वजह से हमें पता चलता है कि जो S wave है वो एक अर्थ के पर्टिकुलर पार्ट से नहीं निकलेगी. That is the liquid part. ठीक है. Okay. It has helped scientists to understand the structure of the interior of the earth. Reflection causes the waves to rebound, whereas the refraction makes waves move in different directions. Okay. The variation in the direction of the waves are inferred with the help of a seismograph. The surface waves are the last to report on the seismograph, जैसे आपने ऊपर देखा. These waves are more destructive क्योंकि surface के ऊपर हैं तो destruction तो हमें वहीं पे देखनी है. And they cause displacement of the rock and hence collapse of structure occurs. तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड भी इन्हीं के अंदर है और यही अर्थ को शेक भी करेंगे और यही बेसिकली डिस्ट्रक्शन भी कॉज करेंगे. ओके. देन प्रोपगेशन ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स चलती कैसे? वन बाय वन. सो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर्स. As the wave propagates, they cause the vibrations in the body of the rocks through which they pass. जहां जहां से जा रहा है वहां से वाइब्रेशन कॉज करेगा. P waves vibrate parallel to the direction of the wave. तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उधर ही P wave भी जा रहा है. This exerts pressure on the material in the direction of the wave. As a result, it creates density differences in the material, leading to stretching and squeezing of the material. तो इसका मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे? इस तरह से. There is a squeezing and there is a stretching. साउंड वेव्स भी इसी तरह से मूव करते हैं. कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इस तरह से बोलते थे हम फिजिक्स के अंदर. ठीक है. अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन वर्टिकल प्लेन. की जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी है. ठीक है. देन hence they create troughs and crests in the material through which they pass. Let me take you to the whiteboard and talk about it. So
when you talk about P waves, so they are similar to sound waves, and sound waves pass through a medium in the form of a compression and rarefaction. So let's say this is the rarefied place, and this will be then the compressed phase, and then again the rarefied place. अभी जिस भी मटेरियल से जाएगा तो उसको ऐसे कभी कंप्रेस करेगा, कभी एक्सपैंड करेगा. तो इस वजह से पूरे का पूरा मटेरियल हिलता हुआ जाएगा जब पी वेव जा रही है. एस वेव का ट्रैवलिंग कैसा है? इट इज लाइक दिस, क्रेस्ट एंड ट्रफ. Okay, the direction of P wave is in the direction of the seismic wave, while this is moving upward. इसकी मूवमेंट या तो ऐसे है या फिर इस तरह से, perpendicular to the direction of the wave. Understood? Hello, hello. So this is like strings on a guitar. Okay. You must have seen strings on a guitar. They move like this, and that's how they move. And this is in the musical instrument. Any कोई कपड़ा ले लीजिए, उसको पहले फोल्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से कर दीजिए. तो that's how the movement is there. Okay. थोड़ी सी इमेजिनेशन क्लास में रखनी है, ज्योग्राफी के अंदर बहुत जरूरी है. थोड़ा थोड़ा साथ में आपको 3D में सोचते रहना पड़ेगा. ठीक है? Okay. The one reason for starting with geography is that it helps in activation of mind. If I started with history, अभी तक आप लोगों में से आधे लोग सो जाते. ठीक है? So anyhow, now what happens? The direction of the vibration of S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane, जैसे हमने अभी देखा. Hence, they create crest and trough in the material through which they are moving. So surface waves are considered to be most damaging waves. E और S waves उतने damaging नहीं है क्योंकि ये तो body के अंदर. ज्यादा डैमेज सरफेस वेव से होगा. Now, what is this emergence of shadow zone? We know that P waves can pass through almost everything, solid, liquid, or gas. But the S waves will pass only through the solid. Yeah, that is why we have something called a shadow zone. Come to this figure. This will help you understand. So, if we talk about the P waves, so as they move through the Earth, we know that core का जो आउटर कोर का पार्ट है दैट इज लिक्विड और इनर कोर है सॉलिड. जब डिफरेंट मीडियम में से पास करेगा तो थोड़ा सा इसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा. टू कंजर्व द एनर्जी इट्स पाथ विल डिफ्लेक्ट. एज द पाथ डिफ्लेक्ट्स, एक पर्टिकुलर शैडो जोन हमें मिल जाएगा जहां पे पी वेव्स नहीं पहुंच रहे, 103 से 142 डिग्री के बीच में. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड पी वेव शैडो जोन. अगर यहाँ पे हमारे अर्थक्वेक का फोकस था और हर डायरेक्शन में पी वेव निकल रहे हैं, तो सब जगह पी वेव आपको फील होगा साइज्मोग्राफ के आप थ्रू अगर देखेंगे तो. बट इस पर्टिकुलर जोन में फील नहीं होगा. कारण क्या है? इधर से ये डिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है, इधर से भी डिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है. ये डिफ्लेक्शन का कारण है चेंज इन द मीडियम फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड अगेन इनटू सॉलिड. दैट्स व्हाई. जो एस वेव है उसका शैडो जोन बहुत बड़ा है. वो 103 डिग्री के बाद कहीं मिलता ही नहीं. कारण क्या है? वो लिक्विड आउटर कोर के अंदर से क्रॉस ही नहीं कर पाता. ठीक है? तो वो इस पॉइंट से ऑरिजिन करेगा और बस 103 डिग्री तक ही मिलेगा, नीचे इस जोन में नहीं मिलेगा. ठीक है? इससे पता चला कि जो बीच में एक पर्टिकुलर लिक्विड आउटर कोर आता है और एक सॉलिड इनर कोर आता है, दिस वेव पैटर्न दैट गॉट क्रिएटेड, दिस हेल्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. And this is the maximum understanding that we have of the Earth's interior. We don't have too much understanding. Yeah. Okay. Then, in the area of intense mining activity, sometimes the roofs of the underground mines collapse, causing minor tremors, and these are called collapse earthquakes. Abhi kuch basic definitions. Then, ground shaking may also occur due to explosion of chemical or nuclear devices, and such tremors are called explosion earthquakes. ये अलग अलग तरह के earthquakes हैं जो यहाँ पे create हो रहे हैं. Then the most common are tectonic earthquakes, which are related to some kind of fault plane on the lithosphere. A special class of tectonic earthquake is also related to explosion of volcanoes. So they are called volcanic earthquakes. So these are the various 4 types of earthquake activities. Then sometimes if you create certain dams or something like this, तो उसके reservoir में भी shaking की वजह से you have reservoir induced earthquakes, or
आइसोस्टेसी इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। यहाँ पे आइसोस्टेसी टर्म मेंशन नहीं है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि है क्या। देखिए, let's think of this as the earth crust. Okay, now on this earth crust, if there is a mountain on top and inside यहाँ पे कुछ एक earth crust है नीचे, तो जो mountain और earth crust के बीच का जो एरिया है, they are having some kind of a pressure equivalence between the two. Yes or no? तो आपस में बैलेंस बना रखा है। अब अगर मैं ऊपर से माउंटेन हटा दूंगा तो नीचे की फोर्स ऊपर की फोर्स से जो बैलेंस हो रही थी, अब वो इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो ऊपर ये मूव होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? सिमिलरली अगर पहले यहाँ पे कुछ नहीं था और मैंने यहाँ पे एक गड्ढा बना दिया और पानी खड़ा कर दिया इसमें बहुत सारा, अब नीचे प्रेशर ज्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो जो एक नॉर्मल बैलेंस अर्थ का था वो फिर से टूट जाएगा। सो इसको नॉर्मल बैलेंस को बोलते हैं आइसोस्टेसी, which was there on the earth crust before we intervened or volcanic activity or anything led to any kind of intervention. If that isostacy is disturbed by mining activity, by creation of a dam, by anything else, then at that point of time there will be again earthquakes. Understood? Isostacy? Hello, hello. Yes, sir. जिसको इन्होंने reservoir earthquake कहा है, वो actually it is because of isostacy. Now, how do we measure earthquakes? So we got something called as Richter scale, जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक देखते हैं कि कितना वायलेंट शेकिंग हुआ। साइज्मोग्राफ के अंदर क्या पता चलता है? अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज टू डिटेक्ट एन अर्थक्वेक, बट टू चेक हाउ बिग और स्मॉल द अर्थक्वेक इज, यू गॉट समथिंग कॉल्ड अ रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड स्केल। सो दिस इज बेसिकली dealing with the energy released during the quake, and it is having a scale of 0 to 10. It was later modified by Mercalli, and that's why we sometimes call it Mercalli scale also, which has a range of 1 to 12. So generally a earthquake with a magnitude of 7 to 8 is shaking enough for you to know, and there's a 10 times difference between 7 to 8. अगर 7 पे कुछ particular shaking था तो 8 पे 10 times ज़्यादा shaking होगा। ठीक है? So effects, ground shaking, ultimately breaking, avalanches, बहुत तरह के आपने देखे हैं effects, तो already you can go for that. Even tsunami is the earthquake which is created at the sea floor level. So उसकी वजह से जो बहुत बड़ी waves create हो जाते हैं, तो they are called tsunamis. Okay? Various kind of destruction can happen due to earthquakes. हमारे जो कच्छ रीजन है उसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन है, तो उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के earthquakes होते रहते हैं। ठीक? Then is the aspect of structure of the earth, that is the crust, mantle and the core. अब यहाँ से हम कल शुरुआत करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को। ठीक है? So यहाँ पे we will be like to discuss the entire aspect, लेकिन I would suggest you to give it a reading before we go into tomorrow's class. Fine? Any doubts so far? So please ask. Okay? So tomorrow's class will be again 4 p.m. to 5:30 p.m. only. The timing will remain the same. And any doubts you have even after that, you can ask anytime.